topic आज हम एक बहुत उत्साहजनक विषय ले रहे हैं which took me a while to understand, जो रेवरेंड को खुद को समझने में थोड़ा सा समय लगा, but when I understood, I realized, oh my God, for so many years I have wasted time by not knowing this revelation. लेकिन जब उन्हें ये समझा तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने कितने साल गंवाए कि ये प्रकटीकरण नहीं समझने में। So today we are talking about doors that not man, not curses, not Satan, which we shut for ourselves. हम आज इस बारे में बात करेंगे कि कोई दूसरा मनुष्य या शैतान नहीं या परमेश्वर नहीं या कोई और चीज नहीं, बल्कि हम खुद हमारे लिए दरवाजे लगा लेते हैं। The doors that man shuts for himself. जो दरवाजे मनुष्य या लोग खुद अपने लिए बंद कर लेते हैं। You know, we have been trained in such a way, but let me tell you, the enemy is not even that big part of your life. और हमारी तैयारी ही इस तरह से हुई है, लेकिन एक बात बताओ कि शैतान या आपका जो शत्रु है वो इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। The enemy does not consume such a major portion of your life. और वो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा भाग भी नहीं है। But the problem is that we want to blame someone, right? लेकिन हमें किसी और पर आरोप लगाना होता है, So we blame Satan. इसलिए हम उसे दोष लगाते हैं। You can't blame, I mean, yourself. Like, see, this is human tendency. You don't get to yourself. First we start finding everybody around us. Who to blame? Blame parents, blame children, blame husband, blame wife. Then if nothing works, blame enemy. This is Satan who's doing it. But then we never come to the real cause. The real cause is you. हम जब कुछ चीजें होती हैं तो हम इसको उसको दोष लगाने में लगे रहते हैं। माता पिता को दोष लगाओ, पति को दोष लगाओ, पत्नी को दोष लगाओ, इस पर इल्जाम लगाओ, उस पर इल्जाम लगाओ, और फिर कोई नहीं मिला तो फिर शैतान पर इल्जाम लगाओ कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी अपनी तरफ नहीं देखते कि हम भी कारण हो सकते हैं। In fact, I can tell you 70% of the time the cause is you. और 70% वजह आप ही होते हो। 70% time the cause is you. 70% बात वजह आप ही होते हो। Because let me tell you one thing. Do you believe God loves you? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? Like he, at least in my life, I have realized that God takes care of every little detail of our life. Yes. That's why when he says that even one hair of your head that falls, I am aware of it. I know. और परमेश्वर इतना हम पर ध्यान देता है कि वो इतना प्यार करता है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है कि वो कहता है कि जब तुम्हारे सर का एक बाल भी गिरता है तो मुझे पता चल जाता है। Like, I mean, I can't tell you, I can't even remember how many instances, in fact, every time that has happened where God has taken care of the slightest detail. Yes. And I'm like, oh my Yes. God, you're a genius. That means, you know what, it makes me feel that I'm watched on. Yes. It makes me feel that I am taken care of. और कभी भी इतना आश्चर्य लगता है कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में इतना ध्यान देता है, इतना सही तरीके से संभालता है, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई तो हम पर ध्यान दे रहा है, कोई तो हम पर नजर रख रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। He is a Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Okay? Our provider. That's परमेश्वर हमारा परोठा करने वाला है, वो यहोवा यीरे है और सही वक्त पे सही चीजें दे देता है। right. So I want you all to understand this very fact that God is watching over me. I am not left by myself. There is a higher power that is constantly watching upon me, over me. और ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है और ऊंची शक्ति है जो हमेशा मुझ पर नजर रखे हुए है, मुझ पर ध्यान देती है, और ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। All right. Now the problem is that there are some people who feel, why am I not receiving help? Why am I not receiving help? और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे मदद क्यों नहीं मिलती है। A person can be so close, okay, can be just so close to his destiny helper, still his destiny helper cannot help him. Why? Because there is a door in between. There is a door in between him and the destiny helper. और कई बार लोग हमारे इतने करीब होते हैं, हमारे तकदीर के मददगार हमारे करीब होते हैं, लेकिन वो हमें मदद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके और हमारे बीच में एक दरवाजा है। It's so strange. You will see your father build houses for people, bless people, do things for people, and then you will wonder that why is he not turning his attention toward me?
Why? Because there is a door. There is a door. और कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पिता लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें घर दिलवा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर उसका ध्यान क्यों नहीं जाता? इसलिए क्योंकि उसके और आपके बीच में एक दरवाजा है। This one agency who has placed millions and millions of people abroad on good jobs, but when it comes to you, why is your application always rejected? और ये एक जो संस्था है जो बहुत सारे लोगों को बाहर देश में काम दिलवाता है, लेकिन जब भी मेरा एप्लीकेशन जाता है या तो फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे हमेशा नकार क्यों दिया जाता है? Because there is a door. क्योंकि एक दरवाजा है बीच में। Many people do a lot of things, put ads and do this and do that, and still you don't see anything happening. Nobody's attention, they can't attract people's attention, they can't attract clients, they can't attract business. Why? Because there is a door. This door is not something that God has intended it to be there. This is not even a curse, this is not even Satan, but let's talk about the doors that man makes himself. और ये दरवाजे होते हैं, कई लोग अपना ऐड डालते हैं या तो फिर अपनी चीज़ों की नुमाइश करते हैं, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं आता, कोई खरीदने वाला नहीं आता, क्योंकि ये दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा परमेश्वर ने नहीं लगाया, नहीं शैतान ने लगाया, ये कोई शाप नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा कभी कभी मनुष्य या लोगों को खुद की वजह से वो लग जाता है। Alright, let's see what Luke 11 verse 7 says. और लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 7वीं आयत क्या कहती है? And suppose the one inside answers, don't bother me, the door is already locked. और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है। The door is already locked. अब तो द्वार बंद है। The problem was not that there was lack of food. That was not the problem. The lack of food was not the problem. The food was available. But that man couldn't help because the door was already locked. और ये नहीं, मुश्किल ये नहीं थी कि खाना नहीं था, खाना बहुत सारा भीतर था, लेकिन समस्या ये थी कि दरवाजा बंद हो चुका था। One could be anointed, hands could be laid over you, prophecies could be made over you, yet you don't see anything happen. Why? Because there is a door. और आपके ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणियां होंगी, आप बहुत अभिषिक्त होंगे और आपके ऊपर लोगों ने हाथ रखकर प्रार्थना भी की होगी, लेकिन कुछ होता नहीं दिखता क्योंकि वो दरवाजा बंद है। Because while that anointing was being transferred, you were not ready, you were not open to receive the anointing. क्योंकि जब वो अभिषेक बह रहा था, आप तैयार नहीं थे उस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए। The prophecies are true, the word of God is true, everything that's spoken upon you is from God. But then it doesn't enter your life because you are not open to receive it. और आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई है वो सच्ची है, परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो सच्चा है, परमेश्वर का वचन भी सच्चा है, लेकिन वो जब अभिषेक बहता है आप तैयार नहीं होते उसे स्वीकार करने के लिए। I have seen people talk about big contacts. I have this contact and that contact, and you see them every day moving with these big contacts. और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। आप देखोगे कि रोज ये लोग इन बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते दिखाई देते हैं। They are with these influential people and these politicians day and night. But if you ask them, how have you been helped? 1 year back, that person has given his petition to this politician who he is hanging around with. And whenever he goes to the politician, he says, sorry, I'm too busy. I'll do it later. I'll do it. But a little later. And you see the same guy going and blessing people who are just ordinary public. और ये लोग जो नेताओं के साथ घूमते रहते हैं, इन्होंने उन नेताओं को एक दरख्वास्त की होती है कि मेरा ये काम करना, 1 साल हो चुका होता है, लेकिन वो जो नेता है वो दूसरे साधारण लोगों का काम करता है, लेकिन इसकी नहीं सुनता, कहता रहता है कि बाद में देखेंगे, बाद में करूंगा, करता हूँ लेकिन बाद में करूंगा। Write this down. Being in close proximity to influential and powerful people, being in close proximity to influential and powerful people does not mean you will be helped. और ज़रूरी नहीं कि आप प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों के नज़दीक रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मदद होगी ही। Alright, so we've understood this, that it's not just the contacts that are going to help you. Yeah, contacts are needed, divine connections are needed, but if you are shut yourself, there is no way that you're receiving help.
और भले ही ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हो, आपके तकदीर के मददगार भी मौजूद हो, लेकिन अगर आप अपने आप को आपने बंद कर लिया है तो आपको कभी मदद नहीं मिलेगी। When you open your doors, you will see that a person sitting in the US will come down and say, I have come to help you. You will see help coming from abroad. Some people that you don't even know will want to come and favor you. People around who you don't even know will say, what, you need this? Why didn't you tell me earlier? I will do it for you. I will do it for you. So wherever you're going, people are just saying that we will do it for you. Favor is like readily available. And listen to me, a greatly favored person is the one who needs to choose. A real blessed person is the one who has what can I say? Who has the grandeur to pick and choose blessing. That means you have reached that level where favor is overtaking you. और जो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, परमेश्वर की कृपा जिस पर होती है, तो वो ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां पर उसे चुनना पड़ता है कि मैं किससे आशीष लूं। Listen to me, you are moving to a level where you will be regal. Where you know there are going to be so many helpers that you will have to choose which one should I pick up. You are moving to a level where you don't have to knock for doors to open, but there are going to be so many doors, so many blessed doors, that you will have to choose which one should I pick up. और आपका समय इतना, आप ऐसे राजा के स्तर पर पहुंच चुके होंगे जहां पर आपके इतने मददगार आएंगे कि आपको चुनना पड़ेगा कि मैं किससे मदद लूं। इतने दरवाजे, इतने आशीषित दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा अब मैं किस दरवाजे से भीतर जाऊं। I want you now to move with this mindset, with this in your mind, that I am not running after blessings, I am not running after favor, but all these are going to overtake me. और इसलिए अभी आप ऐसी मनस्थिति बना लो कि अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, मुझे आशीषों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मेरे आगे निकल जाएंगे। Psalms 24 verse 9, let's see what it says. It says, lift up your heads, O you gates, lift up you everlasting doors, and the King of glory shall come in. भजन संहिता 24:9 ये कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करे। Do you remember we have done a whole series on lifting up the gates? Yes. Gates that were shut due to curses. Yes. All right? When we did those series, when we did the soul healing now as well, those curses have no way to operate. But now is the time to lift up doors and gates which you have built yourself. और हमने ऐसे सीख की थी कुछ महीनों पहले कि सनातन के द्वारों के ऊपर सीरीज की थी, सीख दी थी, और अभी जो आत्मा की चंगाई है उसके ऊपर भी सीख दी थी। लेकिन अभी ऐसे दरवाजों के बारे में बात करेंगे जो हमने खुद के लिए बंद कर दिए हैं। Listen, firstly, there are doors. What is the psalmist trying to say? What is the psalmist trying to say? Firstly, there are doors. Okay, write it down. Firstly, there are doors that are shut. It's not just doors, but those doors are shut. और यहाँ पर दाऊद क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि दरवाजे हैं, और सिर्फ दरवाजे नहीं है लेकिन बंद दरवाजे हैं। Secondly, these doors, he calls these doors everlasting doors. और दूसरी बात वो ये कहता है कि ये सनातन के दरवाजे, सनातन के द्वार हैं। He calls these everlasting doors. सनातन के द्वार बुलाता है वो। So we are very clear about these two things, that there are doors that are shut and that these doors are everlasting. That means these doors have been closed for a very long time. इसका मतलब ये है कि ये दरवाजे बंद हैं और काफी समय से बंद हैं। So here what is the psalmist doing? He's commanding those gates to be lifted up. Why? Why is he commanding these gates to be lifted up? Why is it needed for those doors to be lifted up? Why you got to lift up those doors which you have shut? और वो क्यों कहता है कि उन्हें आदेश क्यों दे रहा है कि हे दरवाजे तुम उठ जाओ, तुम ऊंचे उठो? क्यों कह रहा है? क्यों आदेश दे रहा है? Because the King of Glory cannot enter in. Yes.
as long as those doors are shut, those doors which you shut, God didn't say that I have closed these doors for you. Curses have not closed these doors for you. As long as you don't open those doors which you have closed for yourself, the King of Glory cannot enter in. When the King of Glory cannot enter, how will you see glory in your life? वो इसलिए कहता है ताकि प्रतापी राजा अंदर आए, लेकिन अगर आपके दरवाजे बंद है और प्रतापी राजा अंदर नहीं आ पाएगा, तो फिर आप उसका गौरव आपकी जिंदगी में कैसे देखोगे, उसकी महिमा कैसे देख पाओगे? Now, what has shut these doors? तो क्या चीजें हैं जिन्होंने ये दरवाजों को लगा दिया है? All right. First, we're going to quickly go through this because we've done a lot of studies and meditation on this. First thing, wounded soul. पहली चीज जो दरवाजे बंद कर देती है वो है घायल आत्मा. Not wasting too much time over this because we all know it by now. Okay? A soul filled with offense, unforgiveness, bitterness, jealousy, greed is a wounded soul, and this wounded soul itself is a big door that stops God from entering in. और ऐसा आत्मा जिसमें कड़वाहट है, जिसमें अक्षमा है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें घमंड है, ऐसा ये चीजें दरवाजे लगा लेती है, इसलिए वो प्रतापी राजा अंदर आ नहीं पाता. Second one, one's inability to manage and wrong attitude towards the last miracle. Going very slow once again. One's inability to manage and wrong attitude towards the last miracle. और जो पिछला चमत्कार उन्हें मिला होता है उसे संभालने में वो असमर्थ हो जाते हैं और गलत रवैया रखते हैं. So, what was your attitude towards your last miracle? तो जो पिछला चमत्कार आपको मिला था, जो उसमें उसके लिए आपका रवैया क्या था? Now listen, I deliberately took, I have seen people do this. Okay, a few years ago, or I think much before I even got into ministry, I've seen a lot of people do this. Okay, and then I've seen the effects of it as well. So I'm giving you certain real examples. और रेमन ने खुद ने बहुत सालों से लोगों को ये करते हुए देखा है, तो इसलिए ये उदाहरण के तौर पर वो दे रही है क्योंकि लोग ऐसा करते हैं. There are some who asked God, give me a good lifestyle. परमेश्वर से कुछ लोग एक अच्छी जिंदगी मांग लेते हैं. Or ask God, give me a good house. या तो फिर एक अच्छा घर मांग लेते हैं. So God gives them a good house in a posh locality. इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी जगह एक अच्छा घर देता है, मकान दिलवाता है. In a real posh locality. और सच में एक अच्छी जगह पर एक अच्छे वातावरण में उन्हें घर दिलवाता है. A big house. और बड़ा घर दिलवाता है. But do you know the old mindset? The old mindset. लेकिन पुरानी मनस्थिति आ जाती है. Such a posh house, such a big house. Let me give this on rent and go back to the old. Go back to where I was staying. Go back to that shabby house. I'll at least earn money from this. Let me give this posh house on rent. और वो फिर ये सोचने लगते हैं कि अभी इतना बड़ा घर दिया है, अब मैं इसको किराए पे दे दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और जो पुराना घर है मैं वापस उसमें जाके रहूंगा. वो पुराना घर इतना गंदा था, छोटा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके रहना है क्योंकि यहाँ इस जगह से पैसे कमाने हैं. You have just blasphemed God and His kindness, His favor, His grace. You have blasphemed it all. और आपने परमेश्वर, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को तुच्छ लेख दिया है. That was an answer to your prayer. वो आपकी प्रार्थना का उत्तर था. But because of the old mindset, लेकिन पुराने मनस्थिति की वजह से, because of the greed in the soul, आत्मा में लालच है उसकी वजह से, you said, let me go back to the old locality, to that old shabby house and make more money out of this house. Now that person has never been able to come up to that lifestyle again. And then they see why everybody is moving, everybody is getting better and better. I am also praying. There was a door that you shut back then. You need to go back and repent for that. और आपने इस तरह से दरवाजा लगा लिया है और आपको जाकर पश्चाताप करना है और फिर प्रार्थना करता है कि दूसरे जैसे मैं भी प्रार्थना कराऊं, लेकिन उनकी जिंदगी आगे बढ़ी और मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. That you understand? Who was the one who closed the door? किसने दरवाजा बंद किया? The person itself, man himself closed the door because Yes. what he asked, God gave him. Yes. Then he shut the door for himself. And after that, God is never going to give that person that kind of a lifestyle or that until and unless he realizes, goes back and repents. Okay?
और इसलिए परमेश्वर अभी उसे वापस आशीष नहीं देगा जब तक वो जाके पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि ये उसकी प्रार्थना का उत्तर था। You know, it could be the most silliest things these examples that I'm giving you, but I'm telling you, in the most silliest thing which would never even strike you, Right. but you have shut doors. Alright, you might have given somebody a gift, okay? That gift did not fit that person. And that person calls you day and night, and day and night in the midst of your meetings, he's calling you or she's calling you and saying, please can you exchange this for me? Please can you exchange this for me? The next time, you would never dare give that person your money. Right. And then that person feels that why nobody gives me gifts? Why am I not receiving gifts? Because you were not grateful. Right. You were greedy. You were not grateful, so you just shut your door. You just shut that door. So nobody wants to give you a gift because they're so scared that you will harass them. So nobody gives you. So that was a door that the person shut himself. और ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें आप कुछ भेंट दो तो फिर वो उन्हें जब वो माप में नहीं बैठता तो वो दिन रात आपको फ़ोन करते हैं कि ये मेरे माप नहीं बैठ रहा, आप उसे बदलवा दो, और परेशान करके रख देता है जिसने उसे भेंट दी है। तो जो भेंट देने वाला होता है वो ज़िंदगी में अभी कभी उसको भेंट नहीं देगा, वो 10 बार सोचेगा। और फिर ऐसे लोग सोचते हैं कि कोई मुझे कोई भेंट क्यों नहीं देता, क्योंकि जो आपको भेंट देता है उसे आप परेशान करके रख देते हो। It's not wrong to tell them once that see this didn't fit me, so can you exchange me whenever you're free. But calling them day and night and harassing them like that's the only thing that should be done, that's wrong. और आप एक बार उन्हें फोन करके बता सकते हो कि ये मेरे पाप में नहीं बैठ रहा, मुझे नहीं बैठ रहा, तो क्या आप उसे बदलवा के दे सकते हो, लेकिन दिन रात उस इंसान को फोन करके परेशान करना ये गलत। The third one, replacing God. और तीसरी बात कि परमेश्वर की जगह किसी और को देना। That's how you shut doors. उस तरह से आप दरवाजे लगा दें। Since the time you're being blessed, you don't have time for God. जब से आपको आशीष मिल रही है आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त नहीं है। You have time to catch up with friends, you have time to go for coffees, but you don't have time to come to church, you don't have time to sit and pray with God. आपको दोस्तों से मिलने के लिए वक्त मिलता है, आपको बाहर घूमने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन आपको कलीसिया में आने के लिए वक्त नहीं मिलता, आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए वक्त नहीं मिलता। It's a very, very dangerous stage in your life when you start feeling secure in your blessing. Listen, it's for everyone, for all of us. True. And God is preparing us much before Right. time, much before those greater and mightier blessings come. We need to understand. When you come to that stage in your life, when you start feeling secure and safe in the blessing rather than God, you are closing the door. जब आप आपकी आशीष में ज़्यादा महसूस करते हो और परमेश्वर में महसूस नहीं करते, उस वक्त आपके दरवाजे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अभी से आपकी तैयारी कर रहा है उन बड़े आशीषों को पाने के लिए। You start feeling as long as this blessing is there, I am fine. As long as I have enough money, I'm fine. A little bit prayer just becomes a formality. Okay? As long as I have this great job, I'm fine. Prayer just becomes a formality. As long as I have this husband who is giving me so much, I'm fine. Prayer just becomes a formality. As long as I have got a wife who's a good wife who's taking care of me, I'm fine. When you start finding, listen, even to that extent that, oh my God, I'm at least doing an assignment for God. No, your assignment is different. That's different. That's a work given by God. That doesn't mean that becomes your only, that you don't have a relationship with that. You got to have a relationship with the Almighty, with God Himself. So when these things start happening and you start praying just for formality, and you have no urge to know more from God, to know more about God, or just feel that, you know what, now, no, listen, every day I must spend at least 1 hour speaking in tongues, worshipping and allowing God to download. I must spend some time with God to say, God, what is wrong with me? If there is anything wrong with me, speak to me and take it off me. When those things become a back seat and you are just going to God for formality, for just a 5-minute prayer, you're in a very dangerous place. You are shutting doors.
आप बहुत खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हो और आप दरवाज़ा लगा लेते हो जब आप ये सोचते हो अभी मेरे पास तो काम है, मेरे पास नौकरी है, मैं थोड़ी देर के लिए प्रार्थना किया तो चलेगा, या तो फिर मुझे अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिली है जो मेरा ध्यान रखती है, वो मेरा सब परौठा करती है। तो फिर ऐसे वक्त जब आप पहुंच जाते हो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहाँ पर आप 1 घंटा अन्य भाषा में और परमेश्वर की आराधना करते हुए नहीं बिताते, परमेश्वर के साथ बैठकर ये नहीं पूछते परमेश्वर मेरे साथ क्या गलत है मुझे दिखा, और ये सारी चीज़ें जो तुझसे नहीं है, जो तुझे अच्छी नहीं लगती वो निकाल दे। जब कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता और सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना करके उठ जाता है तो वो बहुत खतरनाक जगह पर पहुंच गया है और फिर अपने लिए दरवाज़ा लगा लेता है और सोचता है कि मैं तो परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, कार्यभार कर रहा हूँ। लेकिन कार्यभार अलग चीज़ होती है और परमेश्वर के साथ रिश्ता अलग चीज़ होती है। आपको कार्यभार के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। Listen, when you're prayer, whenever you go into your prayer room, the first thing you start saying, giving God, is your desire list. That's a dangerous place in your life. When you just seek God because you want something. But the day there are certain, when you start spending time with God, you start changing, and now when you go to God, you even forget about what you want. Do you understand? That's a powerful place. When you go into the presence of God, you forget about what I need and what I want. Moses saw the glory of God. And when he came down, he had to put a veil on his face because people could not see. That was still a borrowed glory. That was a borrowed glory. A glory that was borrowed just for say about 5 minutes in God's. He just saw God pass by and so much glory came on him. That people could not survive. He had to put a veil on his face. So do you understand when you go into God's presence, that awe and that mighty, that sovereignty of God and that power of God, you must go knowing that you're going to meet God and no ordinary man. So that when you come out as a different person. When you go in the presence of God and really the presence covers you, you will forget what you want. You will forget what you don't have. Because the presence fills every gap inside of you. It fills every gap inside of you and you come out like full, and then you realize, what? I forgot to pray about that. I forgot to pray about this. Yeah, because you have really been in the presence of God. That is the real presence of God. जब लोग प्रार्थना के भवन में जाते हैं या प्रार्थना करने जाते हैं तो पहली चीज़ वो अपनी जो चीज़ उन्हें चाहिए होता है, अपनी चाह परमेश्वर के सामने रख देते हैं कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। लेकिन जब आप सच में परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो, जब उसकी उपस्थिति आपको भरने देते हो, तब आप भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए होता है। और सिर्फ जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था और वो 5 मिनट की महिमा से, वो 5 मिनट के गौरव से, वो उसके ऊपर इतनी महिमा आई, उसके ऊपर इतनी गौरव आई कि उसे अपने चेहरे को ढकना पड़ा और लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ 5 मिनट का गौरव था। तो सोचिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तब आपको ये सोच के जाना है मैं किसी मनुष्य से मिलने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। और जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर भर जाती है, जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हो तो आप भूल जाते हो कि मुझे क्या प्रार्थना करनी थी। और जब बाहर आते हो तो आपको ऐसा लगता है मैंने इस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं की या उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं की। इसका मतलब आप सही से परमेश्वर की उपस्थिति में थे और परमेश्वर ने जो सारा खालीपन था वो वहाँ पर भर दिया। Don't let your eyesight be so full of what you want that you forget, that you ignore your insight. We just did this last day. Don't let your eyesight be so full of what you want and what you don't have that you forget about your insight. और आपकी नज़र ऐसी चीज़ों से कि मुझे ये चाहिए या मेरे पास ये नहीं है, इन चीज़ों से आपकी नज़र मत भरने दो कि आप आपकी अंतर्दृष्टि खो दो। Don't let your eyesight lose your insight. और आपकी नज़र आपकी अंतर्दृष्टि को ना खो दे। You know what happens then? You know what happens? Everything that has taken God's place has to one day leave you. Yes. It has to leave you. और जिस भी चीज़ ने परमेश्वर की जगह ली है वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाए। God didn't intend to take it away. God wanted it to be with you for life. Right. God didn't want to take it away. Sorry, that was not God's plan. You made it happen. You shut the door for it because you made the blessing your God. So God, as you know, and if you don't, you must know that God is a jealous God. So if anything takes His place and His throne in your life, that thing has to leave you. It has to leave you. So that's how
man has shut door on himself. और परमेश्वर, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि परमेश्वर ईर्ष्यावान परमेश्वर है, और कोई भी चीज़ जब परमेश्वर की जगह ले लेती है, उसका सिंहासन ले लेती है, तो उसको आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाना ही पड़ता है, और इस तरह से Yes. मनुष्य अपने लिए दरवाजे बंद कर लेता है। I'm going to the fourth point, which is the most important point. Okay? When you refuse to embrace your present with thanksgiving. और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप आपकी अभी की परिस्थिति को आलिंगन देना बंद कर देते हो, वो भी धन्यवाद के साथ। When you refuse to embrace your present with thanksgiving, you shut doors for your future. आपको आपके वर्तमान को आलिंगन देना है, वो भी धन्यवाद के साथ। अगर ऐसा नहीं करते तो आप आपके भविष्य के लिए दरवाजे लगा लेते हो। Listen, do you know God has got tailor-made garments for you for every season. क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने हर ऋतु के लिए आपके लिए अनुरूप वस्त्र बनाए हैं? That garment cannot fit anybody else, and you cannot fit in anybody else's garment. That garment is made for you. It's tailor-made for you for different seasons. और वो उस वस्त्र में कोई और नहीं बैठ सकेगा, ना ही आप किसी और के वस्त्र में बैठ सकोगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए अनुरूप बनाया गया है। What kind of a life I have? Look at theirs. They don't have to struggle. मेरी क्या जिंदगी चल रही है, उनको देखो, कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता। Why do I have to struggle always? मुझे ही हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? Listen, there are people who prefer to sit jobless, okay? But they will say that no, I can't take this because this is paying me too less. It's paying me too less. I can't take this job. I can't take this job. It's paying me too less. And when you ask them what happened about that, no, I didn't take up because that was paying me too less. It'll just be a waste of time. Really, what are you doing? What are you doing with your time right now? Are you doing something better with your time right now? No, but I went to 3, I went to 4, 5 companies, but they are not budging. They are paying me just that much. So what do you decide? Not to take up that job? But do you understand? You have just closed the door for yourself, because that was the garment for you at that time. Whether it was paying you less, but had you understood that this is my garment, this is the garment, and I need to fit into this garment gracefully so that God can promote me to my next. But you know what happens? No, it's paying me too less. You don't fit in the garment. You are not ready for promotion, you are not ready for exaltation, you are not ready for God's next. Because you don't recognize that this is the garment that has come for me. It's not 1, it's not 2, but 5 companies have said we are going to pay you the same. That means I got to understand that this is the garment for me. I got to fit in this garment, thankfully, gracefully get into that garment and move with thanksgiving. और लोग कहते हैं कि तुम नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं और 5 कंपनियों ने मुझे वही तनख्वाह बोली है, इसलिए मैंने वो नौकरी को मना कर दिया और घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब 5 कंपनियां आपको वही तनख्वाह दे रहे हैं, इसका मतलब इस ऋतु के लिए वो वस्त्र आपके लिए है, और जब आप उसे नकार देते हो, आप आपके लिए दरवाजा बंद कर देते हो और फिर परमेश्वर के साथ अगले स्तर पर आप नहीं जा पाते। Now these are those kinds of people who have shut the doors of prosperity and abundance and new opportunities for their future themselves. God has not done that. God has not done that. और परमेश्वर ने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ने अपने लिए आने वाली संध्या, अच्छा भविष्य, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। They have shut the doors of success for them. जो आगे बढ़ने का मौका था, उसके लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हैं। No, pastor said that God is a God of abundance. Pastor said that abundance, God is the God who gives abundance and God opens big doors. So I am walking as to what pastor said. God opens big doors for those who have finished the process. Right. God doesn't make you a multi-millionaire overnight. No, that's not what God does. That's what Satan can do. God doesn't do that. Yes. Have you ever heard of a righteous man becoming a multi-millionaire overnight? Have you ever heard these pastors who are up there reach there overnight?
If you go back, and you know what, this could be your homework for this week. Oh, this is wonderful. Okay, Tuesday, take your favorite pastor. Okay, whoever you watch, who have been great, who are like great people. I'm not talking about any mediocre, average people. No, take about the great ones who are doing mighty work. Pull out your favorite pastor. Go back and see, study his life history. Go to multiple sites and find out the struggles in his life. And Tuesday we will discuss that. Okay? This is going to be our homework. Tuesday we will discuss that. Alright? Okay, cool. और ऐसा कोई भी इंसान आपने देखा है जो नीतिमान है लेकिन रातों रात कभी अमीर नहीं बनता, परमेश्वर कभी रातों रात अमीर नहीं बनाता। और जो भी आप अभी उस ऊंचाई पर देख रहे हो, जिन पास्टरों को आप ऊंचाई पर देख रहे हो, वो रातों रात वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी की है। तो परमेश्वर हमेशा प्रक्रिया से लेकर जाता है। शैतान रातों रात मालामाल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तो अभी आपके लिए गृहपाठ है कि मंगलवार के लिए आपके जो भी चहेते पास्टर है, जो उस स्तर पर, ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनकी आप जीवन शैली, आप उसका अभ्यास कीजिए और हम उसके बारे में मंगलवार को बात करेंगे। David and Joseph did not become great overnight. They had a process to embrace. They had a process to embrace. Now the thing is that what do you do with your process? Do you reject your process or do you embrace your process? If you reject your process, you're just creating a door for yourself. But if you embrace your process, you are getting ready for your next level. Right. David and Joseph. David was just anointed as king and then he was sent out there to serve the person who was illegally sitting on his throne. You just imagine if God asked you to serve your enemy who just did you so much wrong. Forget, listen to me, let's be very real, we can't even stand our own husbands and wives. Why did you say that? Why did you say that to me? In front of so many people, you call me fat. In front of so many people, you abuse you said a wrong thing about my mother. In front of so many people, you said wrong about my family. Oh my God! You know that man will be a dead man till he reaches home and he'll wait, Monday kab aayega, so I can run to office. Like really, we can make a good, healthy, strong man into a dead fish. We can convert. Like that's what we all do. So imagine David. This person took away David's right. He's illegal on there. Illegal. I'll go to all courts. I'll go and seek legal advice. Hire good lawyers. They are seated on they have taken what belongs to me. Really? Really? In the first place, I'm telling you, all those who think about going to court and you feel that matters are going to get settled in court, you are wrong. Because very clearly in the Bible it says, make settlements outside of court. Make settlement outside of court. Because courts are going to waste your time. Courts are, listen to me, it's the first step of you getting into the enemy's entangle. Because you know what? Once your case goes there, you will never be freed from it for the rest of your life. God has to intervene and do a miraculous thing. But if God has given you the wisdom, settle all things outside God. दाऊद और यूसुफ, उनको भी अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। और दाऊद के साथ जब उसे अभिषेक किया, उसे कहाँ भेज दिया? उसे शौल की सेवा करने के लिए भेज दिया। और शौल तो अवैध तरीके से उसकी जगह ले रखा था, लेकिन फिर भी उसे उसकी सेवा करनी पड़ी। और यहाँ पर लोग अपने मियाँ बीवी तक को झेल नहीं पाते और झगड़े होते हैं कि तुमने मेरे बारे में या मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा। तो जब लोग अपना मामला लेकर कचहरी में जाते हैं, तो कचहरी में जाकर वो शैतान के हाथ में सब कुछ दे देते हैं और जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। और पवित्र शास्त्र भी ये कहता है कि अपनी चीजें कोर्ट के बाहर या कचहरी के बाहर ही रफा दफा कर दो। You know, might be your process is not as big as David's. Might be your process is your kids in your house. Might be your process is your husband who you got to handle. Might be your process is your wife who you got to handle. Might be that's it. That's it. But you know what we feel process means? It has to be like a gigantic, a heavy thing, like rock, metal that I have to handle. Because if God's next, obviously this is not a process. Do you know that's the biggest process? That's the biggest process.
So you got to recognize that, you know what, listen, don't tell God that God move me into my next if you can't fit into the garment that has been tailor-made for this season for you. Less salary, okay God, I am done. I will not sit jobless. I will still get into my garment and with thanksgiving move. Okay, this person is difficult in my life. It's okay God, I need to change. It's not easy. We all are working on it. That's why we are doing soul healing, so that we don't shut doors on ourselves. और जहाँ पर भी हो ठीक है परमेश्वर, कम तनख्वाह मैं फिर भी इसमें धन्यवाद देकर आगे बढ़ता रहूँगा। और परमेश्वर ये कठिन है मनुष्य मेरी ज़िंदगी में, मेरे या परिवार में, ठीक है मुझे बदलना है और इस तरह से अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। शायद आपकी प्रक्रिया कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी जैसा आपको लगता है दाऊद के सिर से। शायद आपकी प्रक्रिया आपका पति रहेगा या पत्नी रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, लेकिन अपेक्षा मत कीजिए कि बहुत बड़ा कुछ रहेगा। जो भी रहेगा लेकिन आपकी प्रक्रिया पूरी कीजिए। You know, just because my friend got so and so, I will take loans and I will get it, but I will get it. No, that's not the way that you move into your next level. No, I gotta wait. It's okay. Like, this is not my time for it. This is not my time for it, so I'm fine. I'm fine. I'm gonna wear my garment of the season and be thankful in it. Don't follow people who have not finished their process. और ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए, ऐसे पास्टरों के पीछे मत जाइए जिन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। Don't move around with friends who don't believe in finishing their process. और ऐसे दोस्तों के साथ मत रहिए जो विश्वास नहीं रखते कि हमें प्रक्रिया पूरी करनी है, Because these people will sabotage your destiny. क्योंकि ऐसे लोग आपकी तकदीर खराब कर देंगे। They will sabotage your destiny. आपकी तकदीर खराब कर देंगे। You need to be with somebody who will teach you how to go about and finish the process. ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सिखाएंगे कि आपको आपकी प्रक्रिया पूरी कैसे करनी है। Alright, so David and Joseph were people who finished their process. और देखिए कि दाऊद और यूसुफ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी की। Alright, so what are we trying to say now? We are trying to teach that you must be comfortable and thankful where you are right now. और क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ पर समाधानी रहिए और धन्यवाद देते रहिए। Be thankful. धन्यवाद देते रहिए। With whatever little in your bank account, be thankful and joyful. जो कुछ आपके बैंक अकाउंट में, आनंदित रहिए और धन्यवाद देते रहिए। Whatever your job is paying you right now, be thankful, even if it be just few, like a little bit which you can't even suffice with, but be thankful. Thankful that you at least have a job. और धन्यवाद देते रहिए। भले आपके पास ऐसी नौकरी हो जहाँ पर आपको इतनी कम तनख्वाह है कि आपका महीना नहीं चल पाता, लेकिन उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास नौकरी तो है। Jesus took what he had. यीशु मसीह ने भी उसके पास जो था वो लिया। At that time, what he had was so less, only 2 fish and 5 loaves. That's all. And the crowd that he desired to feed was how much? 5,000. 5,000. God, this much salary, so many ambitions, so much I have to do, so much I have to do for my family, so much this, so much that. How am I going to ever accomplish things? How? What did Jesus do? He took what he had. There was an action that he did. What did he do? He raised it. He raised it. He raised it. And he thanked God. Whatever little you have, fit in that garment gracefully and raise it to the Lord and thank Him for that. That God, I don't even deserve this much, but what you have given me is much. I thank you for this. And you know what happens? It multiplied so much that even when people ate stomach full, so many baskets were left over. That's what God does. That's what God does. Why? Why do you answer Jesus? Because Jesus hasn't shut his door. He didn't get into a panic mode. Oh my God. Like what now? 5,000 and with this, what am I going to do? And even listen to me. Those disciples came and they said, can we go to the market? He said, no. There is no time.
He didn't panic going here, going there, get this one, get that one, try to fix this, try to ask this one, go do that. No, no. Whatever he had, he lifted it to the Father. Lifted it to the Father and said, thank you, Father. And then the Father knows what to do. The Father knows his job. You don't need to teach him. The Father knows what to do. यीशु मसीह ने भी जब वो 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ उसने ऊपर उठाई और परमेश्वर को, उसके पिता को धन्यवाद दिया, वो डर नहीं गया कि अब मैं क्या करूँ, इतने लोगों को खाना खिलाना है, 5000 लोग थे वहाँ पर, तो इतने लोगों को खाना खिलाया, मैं किससे मांगूँ, मैं कहाँ दौड़ूँ। जबकि शिष्यों ने खुद कहा कि क्या हम जाके खरीद कर लेके आए, उन्होंने कहा, तो यीशु ने कहा नहीं अभी समय नहीं है। तो उसने जो उसके पास था उसके लिए धन्यवाद दिया और फिर पिता ने उसका काम किया, उसने उसका गुणन किया। तो जब आपके पास जो है उसको ऊंचा उठाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो पिता को पता है कि उसका गुणन कैसे करना है, उसको उसका काम करना आता है। Amen. You just do what you have to do. Don't bother with multiplication. You can never do it. You can never do it. You will try to fix and multiply. Okay, this month I'll save this much. Next month a little more. It's all watered out. How many of your plans, or is it just my plans that are watered out? No. No. Every time I make big plans of multiplication, no, God never allows it, because He says multiplication is, you be wise with what you're doing, but allow me to multiply. Because as a person, how much can you multiply? Not to the extent what God has done, that after 5,008 stomach full, still so many baskets were left over. So why don't you just do what you have to do, which is thanksgiving and praise, and leave the multiplication to the Lord. और गुणन करना ये आपका काम भी नहीं है, आपको आएगा भी नहीं करने के लिए। तो आपका जो काम है वो धन्यवाद देना और परमेश्वर की स्तुति करना, यही आपका काम है। और गुणन का काम परमेश्वर पर सौंप दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर करता है तो सिर्फ आप पुरौठा, पूरी तरह से पुरौठा नहीं होता, बल्कि बचता भी है। God, I feel like calling my whole church home and inviting them for dinner, inviting them for a meal, for a feast. But God, I can't do it because I got a small house. So then what? You don't have to go and pressurize your husband to buy a bigger house whether or not he can afford it. No, you don't do that. You take that small house and you decorate that small house in such a way that God, who's watching, says that, you know what, you have bypassed this now. You have bypassed this. Now I don't think I can keep you in this house, because this house is just, you were just too good for this house. Because this house was so small, but you made it look like a mansion already. So now is the time that that door lifts up and you move into a mansion that has already been ready for you. That's when you talk about, we are going to live in mansions which we have not built. When you learn to make your present like a mansion. When you learn to make that little thing as beautiful that God cannot resist. God says, you know what, this is time now, I got to move. और आपको कलीसिया के लोगों को घर बुलाना है, उन्हें दावत पर बुलाना है, लेकिन घर छोटा है, इसलिए आप आपके पति के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए ताकि मैं लोगों को घर पे बुला सकूं, उन्हें दावत दे सकूं। लेकिन जब आपका जो भी घर है उसे ही ऐसे अच्छी तरह से सजाते हो और लोगों को बुलाते हो, तो परमेश्वर जान लेता है कि अभी समय आ गया है इसे बड़ा देने के लिए, और तब परमेश्वर बड़ा घर देता है आपका विश्वास करना देखकर कि जो भी है उसमें ही आपने समाधान मानकर उसे ही अच्छी तरह से रखा है। तब आप ये कह सकते हो कि हम ऐसे महलों में रहेंगे जो हमने बनाए नहीं हैं। You know why I give you this example? Because thanksgiving is not just a word. Thanksgiving is not just a word. Anybody can stand in the church and stand in the house and during the worship and say thank you, thank you, thank you, God. No, I don't believe thanksgiving is a word. Thanksgiving is an action. Thanksgiving is an action. If you are really thankful for what God has given you and you really cherish and are thankful for what God has done, you know what? Your words don't have to scream, but your way of life will scream loud enough to say that this person is really thankful for what God has done for him. When they walk into your life, your attitude, your behavior, your house, yourself, everything has to scream out. Your lifestyle has to scream out that I am thankful to God. I am thankful to God. That's why I keep saying, write it down. Thanksgiving is not a word in my dictionary anymore. It has to become my lifestyle. It has to become my lifestyle. Now, whatever I do, in whatever I have right now, I'm going to make it such that God will Himself say that I
can't keep you in here for any longer. People who come will see and say, look what the Lord has done. You know, it could be the smallest house and the smallest space in your life, and people can come in and say that, oh my God, what have you done? Oh my God, beautiful. And then you think that, what have I done? I don't even have as much. But do you know, that's nothing. That's only your thankfulness. Because you have kept that small thing so precious and so nicely, and that's your achievement. I'll tell you, your achievement is not when you go into that mansion. That's the first sign that you're ready to move out of that small patch. That's the first sign when people come and appreciate you for the way you are handling your present, is the first sign that you're ready for the next. Are you with me? Write it down. This is what we need, people. This is what we need, because we don't know how to appreciate our present. We are so busy trying to make a future. Future doesn't come like that. Future comes when you handle the present well. और भविष्य ऐसे नहीं आता, वो तब आता है जब आप आपका वर्तमान काल अच्छे से संभालते हो। और आप ये सोचते होंगे कि मेरा तो छोटा घर है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि तुमने कितना अच्छा घर रखा है। तो आप सोचते हो कि ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तब परमेश्वर जान लेता है कि अभी इसे बड़े में जाने की जरूरत है। तो धन्यवाद ये सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, धन्यवाद आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। आपकी हर क्रिया में धन्यवाद परमेश्वर को दिखना चाहिए, ताकि लोग फिर ये जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में फिर कार्य करने लगेगा तो लोग कहेंगे कि देखो परमेश्वर प्रभु ने क्या किया इसकी जिंदगी। Another door that we shut is when we feel that we don't have anything to learn from anyone. और दूसरी दरवाजा जब हम तब लगा लेते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। You can learn anything from anyone, anywhere. God doesn't use only a believer to teach a believer. God can use a heathen to teach a believer. But I don't understand why believers don't take it with grace. In fact, you're getting a free opportunity to learn. That person doesn't even know he's teaching you. Yeah. True. God is a wise God. परमेश्वर होशियार परमेश्वर। God, prosper me so I can glorify you. परमेश्वर मुझे तू बरकत दे ताकि मैं तेरी महिमा करूं। Expand my business so I can glorify you. तू मेरा व्यवसाय बढ़ा ताकि मैं तुझे महिमा दूं। You know what God says? My little child, first glorify me in your present, and then let's talk about the expansion. If you can't glorify me with your present, I can't trust you for your next. और परमेश्वर होशियार परमेश्वर है, वो कहता है मेरे पुत्र मुझे अभी इस परिस्थिति में वर्तमान काल में मुझे महिमा दे, ताकि फिर मैं भविष्य के बारे में बात करूं। अगर तू मुझे अभी धन्यवाद नहीं दे सकता तो मैं तुझे भविष्य के लिए कैसे तेरे पर भरोसा करूं। The last point, people who do not respect the ministry of man. ऐसे लोग जो दूसरे मनुष्य की सेवकाई का आदर नहीं करते। Write this down in your notes and keep it in your mind, in your prayer forever. Jesus grew in favor with God and man. यीशु मसीह की कृपा में सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि मनुष्य के साथ भी बढ़ा। ये लिख लीजिए। If you just plan to secure favor with God and have nothing to do with man, there is nothing that God can do for you. Because God, if God has to bless you, He's got to bless you through some man. Right. अगर आप सिर्फ परमेश्वर को पकड़े रहेंगे लेकिन अब मनुष्य को नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा ही तो आशीष देगा। The Israelites did not respect the ministry of Moses. और इस्राएलियों ने मूसा की सेवकाई का आदर नहीं किया। They had an attitude that it's his job. He got us out, now it's his job. उनका ऐसा रवैया था, उसने हमें बाहर निकाला, अभी हमारे संभालने का काम उसका है, ये उसका काम तो है। First of all, he didn't need to do it. He became a mediator for you, so that God can use him to get you out of your slavery. पहली बात तो उसको करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक जरिया बना। परमेश्वर ने उसको एक जरिया जैसे इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को वो जो गुलामी है उससे बाहर निकाल सके। But they treated him like a paid tour guide. लेकिन उन्होंने उसे गाइड की तरह इस्तेमाल किया। Like a tour guide. Moses, no water. Moses, where are we going? Moses, fix this. Moses, fix that. You took us out. You are our responsibility. Pastor, your responsibility we are. No, sir. No, ma'am. Nobody is responsible for your life but you alone. True. God uses man
But if you can't respect the ministry of man, you will lose that. You will close doors for yourself. So then what happens? That pastor never takes you anywhere next time. Like then it's you, your holiday, send us pictures, we will say, wow, hallelujah, amen. People who try to come and help you, no. We don't know how to take it with thanksgiving. How to be grateful to destiny helpers. That's why destiny helpers are never seen in our lives. Anybody, not necessarily has to be an influential person. Anybody could be a destiny helper. Listen to me. Right. So many people Right. crib about maids. मेरे घर पे कोई maid नहीं टिकती है and this and that. First of all, many don't know how to treat their maids, their house helps. They don't know how to treat their house helps. You don't want to give her money on time. You don't, when she comes to your house, you don't even offer her a cup of tea. You can't, you treat her like she is some animal. You can't care for her. You don't ask her how are you feeling. If today you're not feeling too good, it's okay. You can do that rest of the work tomorrow. No, you sit on her head and try to, you behave like she's some slave. Then that's the hell which God will cut off. You are building a door right there, because God is watching that you can't treat your house helps well. So then you don't get a house help. You don't. And then we keep searching that, oh my God, why these people have 2-3 servants and how come they have so much of help? And say, yeah, because you just shut the door for yourself. और लोगों को तकदीर का मददगार पहचानने में मुश्किल होती है, लेकिन वो आपको मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको कैसे संभालना है या उनके साथ कैसे रवैया रखना है यही नहीं उनको आता। तो घर में जो औरतें आती हैं काम करने के लिए, उनको कैसे किस तरह से उनको रखना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनसे इतना काम करवा के लेते हैं तो फिर कहते हैं या उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं देते और फिर कहते हैं कि मेरे घर में कोई बाई नहीं टिकती। कैसे टिकेगी, आप कैसे आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मदद वहीं पे काट दी है। या तो फिर मूसा के साथ जैसे इसराइलियों ने कहा कि तूने हमें बाहर निकाला है, अब हम तेरी जिम्मेदारी है, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा, उसे पैसे दे के जैसे गाइड को किया जाता है उस तरह से उसके साथ बर्ताव हो रहा था। तो जब बाहर भी जाते हैं तो अगर पास्टर लेके जाता है तो कहते हैं आपने हमें लेके आया, अभी हम आपकी जिम्मेदारी है, अभी हमें कैसे ठीक से रखना है ये आप देखिए। The problem is that we don't know how the system of the brain works. और समस्या यह है कि हमें पता नहीं है कि दिमाग की प्रणाली किस तरह से काम करती है। We have not yet been trained to handle the outside. और तैयारी नहीं हुई है कि बाहर से आने वाली चीजों को कैसे संभालें। We keep shutting doors because our inside is not trained to handle the circumstance and situation that come from outside. और हम दरवाजे इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर की आने वाली परिस्थिति को कैसे संभालें ये हम समझ नहीं पाते, हमारी तैयारी नहीं हुई है। Our brain has two sides. और हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, It has two hemispheres. दो गोलार्ध होते हैं, The right hemisphere and the left hemisphere. और दायां और बायां होता है। And what happens is that when we don't know how to work these two, they might be different in their nature, in their character, but they cannot work singly. They need to be worked together. और ये जो दो भाग है ये अलग अलग काम नहीं कर सकते, इन्हें साथ में ही काम करना होता है, भले ही उनके चरित्र अलग अलग हो। They cannot work individually. और एक ही भाग एक शरीर का काम नहीं कर सकता, साथ में काम करना होता है। So let me tell you, the left side of your brain तो जो आपका बायां भाग है दिमाग का, does the thinking and the reasoning. और जो सोच और तर्क करता है, It's where your intellect lies. और जहाँ पर आपकी होशियारी, आपका दिमाग रहता है, It's where the logic lies. जहाँ पे तर्क होता है। And the right side of your brain और जो आपका बायां भाग होता है, is where your emotions, feelings and imaginations are. जो दायां भाग होता है जहाँ पर आपकी कलाकृति होती है। So what happens is that the right side, when situations come, you need to train your mind first to take that situation or to take that whatever words that have come, to take it first to the left side of your brain. और जब भी कोई परिस्थिति आती है तो दाएं की बजाय उसे हमेशा बाएं में लेके जाओ। So that in the left side of your brain, you start thinking upon that situation. क्योंकि फिर आपका बायां भाग उस परिस्थिति पे सोचने लगता है। You start thinking that is it necessary to speak that way? Is it necessary to throw
to get angry on something? Is it necessary to send a stinker to that person? और फिर वो सोचने लगता है कि क्या ज़रूरी है कि मैं इस तरह से उसे बात करूं या मैं उस इंसान पर गुस्सा दिलाऊं, क्या ज़रूरी है? Is it necessary to put a bad comment on social networking sites? या क्या ज़रूरी है कि मैं इस तरह का कमेंट डालूं? So this part of your brain helps you think about these things, helps you think and bring the situation into the right place. और फिर बायां भाग सोचकर जो परिस्थिति है उसे सही नजरिए में लेकर आता है. And what happens is that then you start living your life not reactive but responsive. और इस तरह से फिर आप आपकी जिंदगी प्रतिक्रिया में नहीं देते लेकिन सही जवाब देने में आपको पता चल जाता है. You no longer are a reactive person but you become a responsive person. आप प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बनते लेकिन सही उत्तर या सही जवाब देने वाले बनते. You no longer react with anger, with bitterness. You don't do that any longer. आप गुस्से में या कड़वाहट में प्रतिक्रिया नहीं देते. And in the bargain, you don't wound your soul and you don't shut doors. और इससे क्या होता है कि आप आपके आत्मा को घायल नहीं करते और दरवाजे नहीं लगाते. So that's how we need to learn how to work both the sides of our brains together. और इस तरह से हम दोनों भाग को एक साथ काम करना सिखा सकते हैं. You know, very simple. It's just for an example so that you can understand better. If I come to your house and you have children who are playing and screaming, we cannot have a conversation. और उदाहरण के तौर पर अगर रेवरेंड आपके घर पे आए और आपके बच्चे बहुत गड़बड़ मचा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, तो आप बातचीत नहीं कर पाओगे. So you decide, let's just move out to some coffee shop and we can speak there. तो आप ये निर्णय लेते हो चलो कहीं बाहर जाकर हम कॉफी पिए और फिर वहाँ पर बात करें. It's the same thing. You need to if you know that you cannot react, you're not going to be able to respond to that situation, instead you're going to react to that situation, you need to step back, you need to move out. और अगर आपको पता है कि मैं यहाँ पर सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं अगर प्रतिक्रिया करूंगा तो फिर आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए. When you know you're about to wound your soul and shut a door on you, it's better to leave that place without speaking a word. और अगर आपको ये लगेगा कि मैं अपनी आत्मा को इस तरह से घायल करूंगा और फिर अपने लिए दरवाजा लगा लूंगा तो बेहतर है कि आप वहाँ से निकल जाओ. Because the left side is still screaming and yelling, and now what has to happen, because they can't work individually, the right side is screaming, and because you can't work individually, the left side has to shut down. क्योंकि दायां और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बाई ओर का दिमाग बंद हो जाता है. That's how we shut doors. इस तरह से हम दरवाजे भी बंद करते हैं. That's how we kill opportunities that have come our way. इस तरह से हम जो संध्याएं हमारे पास आती है उसे मार देते हैं. Because we have only learned how to react and not how to respond. क्योंकि हमने सिर्फ प्रतिक्रिया देना सीखा है, सही उत्तर देना नहीं सीखा. So the real victory is when we come to a point where we understand, we learn, and we have to build up. We have to build up this method of working both the sides together. और इस तरह से हमें सीखना है और इसे निर्माण करना है और इसमें आगे बढ़ना है. उसमें तैयारी करनी है कि दोनों ये भागों को साथ में कैसे काम कराएं. This is not going to happen overnight. ये रातों रात नहीं होगा. You need to train your brain. You need to train your both sides of your brain to do their functions which will benefit you and not harm you, in a way that it will benefit you and not harm you. और आपकी दिमाग की आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि जब दोनों भाग काम करें या आपके फायदे का हो, ना कि आपको नुकसान पहुंचाए. So beloveds, I just want to leave this word with you that doors are shut. Doors which are shut by you, it's not that they will always remain shut. This is the time when you start using the keys together, you can open those doors once again. और ज़रूरी नहीं कि ये दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए लगा दिए गए हैं. आप इन चाबियों को इस्तेमाल करके उन दरवाजों को फिर से खोल सकते हैं. When we start learning how to use the brain, how to train the brain, how to condition it, guaranteed you will shut no more doors. जब आप आपके दिमाग की तैयारी करते हो कि दोनों भागों को साथ में कैसे काम कराएं, आपके लिए फिर कभी दरवाजे नहीं लगा दिए जाएंगे. Father, I just want to thank you. I bless all those who are watching us and all those who are tuned to this word, Lord. परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं जो भी इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए और जो इस वचन को इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं. Give them the grace, my God, to operate in the right brain, in the right format, my God. परमेश्वर उन्हें तू अनुग्रह दे ताकि वो सही दिमाग का इस्तेमाल करे और सही तरीके से करे.
Lord, I thank you for giving them the knowledge. My God, enough knowledge that they will not perish. Enough knowledge that they will not abuse any blessing in their lives, my और God. परमेश्वर उन्हें तो इस तरह से ज्ञान दे ताकि जो आशीष उनके जिंदगी में आए उन्हें वो खराब ना कर दे, Because indeed your word says that my people perish because of lack of knowledge. क्योंकि तेरा वचन कहता है ज्ञान के अभाव से मेरे लोगों का नाश होता है। Thank you, Father, for filling them with knowledge that they will keep soaring higher and move from glory to glory and strength to strength. और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे ताकि वो गौरव से गौरव में और शक्ति से सामर्थ्य से सामर्थ्य में आगे बढ़े। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen.